Okay, so today we are going to do one example of clustering, right? Before I start with the example, I just want to clarify a few things which I found that could be a little confusing for you all. So what I am trying to say is here is that we have done two examples, almost two or three examples of orange data mining. अब हम क्या चीज पे फोकस कर रहे हैं? See, number one is the domain, है ना? So we first did a sentiment analysis problem wherein my domain was NLP. ठीक है ना? उसके बाद we went on to data science वाला डोमेन. डेटा साइंस वाले डोमेन में yesterday we worked on the iris data set as well as the palmer penguins. फाइन. अब इसमें ये दोनों जो डेटा सेट्स पे हमने काम किया है, जो भी हमने काम किया है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वन टारगेट रिजल्ट. Like in iris data set, I was trying to find out the type of the flower, and in penguins one, I want to find out the type of the penguin, right? So ये दोनों ही मेरे क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स है. सो आई एम लाइक ट्राइंग टू फोकस ऑन द फैक्ट दैट machine learning I'm trying to make my machine do, and then after that I'm trying to see what it has learned, whether it has been able to classify the thing correctly or not. And uh, in the supervised learning में हमने सीखा क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, है ना? तो हमने क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स करे इन डेटा साइंस, हमने अभी रिग्रेशन का एग्जाम्पल नहीं किया है. क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में कहाँ पर डिफरेंस आता है? क्लासिफिकेशन का जो आउटपुट है दैट इज डिस्क्रीट वैल्यूज, आइदर दिस और दिस. तो हम उसको बाइनरी क्लासिफिकेशन बोलते हैं. एंड यू मल्टीपल वंस देन यू हैव यू नो मल्टी क्लास डेटा. सो what we have focused upon here, first examples हमने किया for data science, which is the iris one. There also we are getting the answer in terms of discrete values, either iris setosa or iris virginica, है ना? So this is my classification model के बेस पे. सेकेंड वन पामर पेंगुइन्स में भी हमने पेंगुइन्स को क्लासिफाई किया. अगेन क्लासिफिकेशन मॉडल. वी हैव नॉट डन एनीथिंग ऑन रिग्रेशन. ठीक है. सो हमें रिग्रेशन पे भी एक और दो वट एवर वी हैव टू वर्क. रिग्रेशन हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज उसका आउटपुट थोड़ा कंटिन्यूअस बेस पे होगा. इट विल नॉट हैव एग्जैक्ट 3 to 5 वैल्यूज. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट द प्राइस प्रोडिक्शन, हाउस प्राइस प्रोडिक्शन, ठीक है, उसमें वी आर टेकिंग मल्टीपल पैरामीटर्स कि कौन से एरिया में है घर आपका, और यू आर ट्राइंग टू बाय समथिंग. सो कौन से एरिया में है, व्हाट इज द साइज ऑफ द हाउस, हाउ मेनी रूम्स, विच साइड ओपन, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सब इनपुट लेके आई ट्राई टू प्रिडिक्ट द प्राइस. राइट. नाउ दैट प्राइस वैल्यू कैन बी लाइक 1,03,000 ऑल्सो एंड 1,04,002 रुपीज ऑल्सो, एंड इतने वैल्यूज हो सकते हैं ना. It can be different things, multiple values in a range of maybe 1 crore to 2 crore or 1 lakh to 2 lakh, whatever. I'm just giving an example. So when you have this kind of a thing कि multiple values हो सकते हैं, different, any value can be there in that entire range, then we say that we are talking about a regression model, because we say that the output is continuous. It's not discrete. Exact values नहीं है कि यही चार होंगे, यही दो होंगे, यही 3 वैल्यूज होंगे. फाइन. इज द डिफरेंस क्लियर? सो हमने क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स किए. रिग्रेशन वी हैव टू डू अंडर द सुपरवाइज्ड वन इन डेटा साइंस. हमने एक एनएलपी का करा. अब आज हम एक विजन का करेंगे. ठीक है. एक एक एग्जाम्पल करके देन सो हमने एक टेक्स्ट माइनिंग को विजिट को यूज कर लिया. डेटा को तो हम यूज कर ही रहे हैं. ट्रांसफॉर्म को भी हमने यूज किया, हमने उसमें इम्प्यूट किया. उसके बाद हमने मॉडल को यूज किया. फाइन. आज हम इमेज एनालिटिक्स पे काम करते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दी डेटा विजन नाउ. कंप्यूटर विजन जिसको हम कह रहे हैं, राइट? उसका हम एक एग्जाम्पल करते हैं. बट इन दिस एग्जाम्पल व्हाट डेटा आई कुड फाउंड, बिकॉज यू नो द डेटा सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट in this case. So what data I found, and it's there as part of your book also, that is of a clustering example.
ठीक है। ना क्लस्टरिंग का क्या होता है, डिफरेंशिएशन फ्रॉम योर दिस थिंग, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, दैट क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन आर बोथ कमिंग अंडर सुपरवाइज्ड लर्निंग। मतलब हम उसको लेबल्ड डेटा दे रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि भाई ऐसा है तो ये है, ऐसा है तो ये है। लाइक हमने उसको इतने सारे सेट ऑफ डेटा दिया फॉर आइरिस में कि ये अगर सेपल लेंथ है, ये अगर पेटल लेंथ है, तो विड्थ है दोनों का ही, तो देन दिस इज द थिंग, right? For Palmer penguins also, I gave him certain parameters, and based on those values only, I'm giving him, if these are the parameters of these values, then this is my penguin category. So I'm already labeling them and giving it to him, जिससे वो लर्न कर रहा है, देन मेरे गिवन डेटा सेट पे वो प्रिडिक्शन लगा रहा है कि अच्छा ये फिर ये होना चाहिए, राइट? बट क्लस्टरिंग के अंदर हम उसको लेबल करके नहीं देते, बिकॉज क्लस्टरिंग इज कमिंग अंडर अनसुपरवाइज्ड, है ना। हमने तीन तरह का लर्निंग सीखा, वी डिस्कस्ड अबाउट, वी हैव बीन लर्निंग अबाउट सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट, करेक्ट। तो सुपरवाइज के अंदर वी हैव क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, वी हैव डन एग्जांपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल अंडर डेटा साइंस, विच वाज माय पामा पेगुल्स एंड आयरस डेटा सेट। ठीक है, रिग्रेशन हमें करना है, वो हम हाउस प्राइस इंडेक्सेस, सैलरी थिंग देखते हैं, व्हाट एग्जाम व्हाट डेटा, इसका डेटा सेट फिर भी अवेलेबल है। मेन इज द सीवी का प्रॉपर डेटा सेट ट्रेन एंड टेस्ट का मिलना, अदरवाइज खुद बनाओ, इट इज अ डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, सो दैट इज दैट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनसुपरवाइज में, दैट इज हम उसको लेबल डेटा सेट नहीं दे रहे हैं। आई एम नॉट टेलिंग हिम दिस इज अ पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज अ पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, हम उसको कुछ नहीं उसको लेबल करके दे रहे हैं। वी आर गिविंग हिम द एंटायर डेटा सेट, ही हैज टू जज द pictures and identify the similarity, dissimilarity, features, etc., etc., and then give me the conclusion that I found this set of things uh, as one category, and I found this set of things as another category, और multiple जितने भी आप उसको दोगे, जितना भी डेटा उसको दोगे, अकॉर्डिंगली वो उसको क्लासिफाई करेगा। Like the book talks about the example of dog and cat images. So I'm giving him a lot of images of dogs and cats, but not telling him which image is what. So using the clustering model, we are going to see that how he is able to himself make those two classes, एक dogs का class और एक cat का class. When I was exploring a few more data sets, there I found that uh, another example could be like you talk about rotten fruits and fresh fruits. ये एक practical example भी आपका हो सकता है for a AI model to be implemented. That I am giving him a set of fruits. Okay, if not rotten and fresh, let's talk about the set of fruits. Now, all those pictures में से अब वो खुद उसका ग्रुपिंग करेगा। उसको मैंने नहीं बताया कि ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये बनाना है। ही इज गोइंग टू सी ऑल द पिक्चर्स, फाइंड आउट द फीचर्स, कंपेयर देम, एंड देन फाइंड इट आउट दैट ये कितने ग्रुप्स के फ्रूट्स इसके अंदर हैं, कितने अलग अलग कैटेगरीज ऑफ फ्रूट्स हैं। इज द डिफरेंस क्लियर कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? Yes, ma'am. Sure, na? So we Yes, have ma'am. done Yes, ma'am. examples of classification. We are supposed to do examples of regression under data science. We have done one example of sentiment analysis, which is coming under the NLP. And today I'm going to do one example of CV. And then further on, we do one more example of CV, which is a good example actually. It's on coral bleaching. I got it from the 10th manual. उसका data मिल गया मुझे. So we'll do that example. First let's that is again a supervised one, जो हम वो वाला कोरल ब्लीचिंग वाला करेंगे, दैट इज अ सुपरवाइज्ड वन। वो भी क्लासिफिकेशन मॉडल है, वो क्लस्टरिंग नहीं है। उसमें हम उसको क्या कर रहे हैं कि वी आर गिविंग हिम आजकल कोरल रीफ्स विच आर देयर, सो ब्लीच्ड एंड अनब्लीच्ड को वो निकालेगा पिक्चर्स को देख के कि ये करेक्ट है या गलत है, आई मीन ब्लीच्ड है या नहीं है ब्लीच्ड, राइट? So different pictures we'll give under bleached category and different pictures under unbleached category. So he learned from there, and then when I give him a test set to check, he should be able to differentiate कि ये bleached है, ये unbleached है. So classification only, bleached, unbleached. That's my output, right?
So classification model with vision, that we'll do later. Today we do a simple one, that is a clustering model. Okay, so let's start. I'm sharing my screen. You also simultaneously do with me. So I'll start my orange data mining, and for you to do it simultaneously, I need to give you the data. For that, mm, for that, how do I give you? This is my data set. Okay, let me do one thing. See, these are pictures of cats and dogs, but nothing has been classified and told to him that this is a dog and this is a cat. ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ. Let me do one thing. Let me take you to. You keep your orange data mining open. Then I'll give you the drive link of the images. From there you can download it, है ना? ओके, सो अब हम ले जाते हैं अपना डेटा के पास इसको. Let us zip it up. I'm giving you both the things because you ultimately need both of them later. And this one also. ठीक है, अब हम इसको कॉपी करके शेयर करेंगे. है नाउ, ये मुझे यहाँ से दे देना है ना. Where did it get saved? Why can't I see that? Am I doing something wrong? No. अच्छा, this तो is there already. This sound good. I will have to change the variety from, है ना? चलो, now see, have you got it and are you able to open that? No, see, it's not. Ma'am, you need to grant us access to it. Right. I am. I gave the viewer rights. I need to give the editor rights. आप चेक करो. Yes, ma'am, it's working now. Oh, great. Now, shall you also download? Both of you also download so that we can start.
नेक्स्ट टाइम से मैं ये करके रखूंगी। आई एम सॉरी आई टुक योर टाइम। आई डेंट रियलाइज कि इसको भेजना पड़ेगा डेटा को भी। So for the next one, it's ready with us. Rather, I'll send you this also, and you keep download it and keep it with you because ये हमारा next example है। So keep the data handy. So this link also is करके रखो। डाउनलोड करो फिर अनजिप करो and then be ready to start. सेकंड वाला डाउनलोड करके रख दो, फर्स्ट वाले को अनजिप कर लो फॉर टुडे। चलो स्टार्ट। It's actually a very simple example, but the explanation and understanding was important, so I thought I'll tell you that thing exactly हम लोग किस direction में कौन कौन सा example कहाँ हमें लेके जा रहा है and what are we doing. That's important to be understood. Absolutely. Okay, so downloaded. Yes, ma'am. Okay, unzipped. Yes, ma'am. Okay. Naisha, you were also able to do it, beta? Yes, ma'am. Okay. Naisha, yesterday's work was done? Sorry, ma'am. Couldn't do it? Ma'am, I cannot hear you. I'm saying that was yesterday's work done? Yes, ma'am. Okay. Oh, I think my volume is very low. I'm so sorry. Is it better now? Yes, ma'am. Okay, great. Fine. So, acha, yesterday, one more thing I wanted to clarify while we were doing it, Naisha. You saw there was there was a gap in the graph. Sorry. Last, Yes, ma'am. है Yes, ना? ma'am. That problem was because of the nan values. Actually, I had dropped it. Drop इन करके मैंने उसको किस में DF1 में डाला ना, है ना? तो हम लोग ग्राफ तो DF से बना रहे थे, तो DF के अंदर तो वो NA वैल्यूज था। Hmm. ठीक है। तो अगर आप NA वैल्यूज को Okay, रिमूव कर ma'am. लोगे, यू कैन डू बेसिकली DF इज इक्वल टू DF डॉट ड्रॉप NA। तो DF को रिप्लेस कर दिया विद द आफ्टर रिमूविंग द नाइन वैल्यूज, राइट? एंड देन व्हेन यू अप्लाई Okay, द ma'am. ग्राफ इट विल बी करेक्ट। Okay, ma'am. Okay, great. So, chalo, let's start. Now we are going to work with this particular widget, which is the um, which is coming under the image analytics. हम लोग ये वाले को यूज करेंगे। So सबसे पहला of course is import images, and we open it, and I take him to the place where my images are there. Specify the folder. No need to give him the images extracted. Okay. Select the folder. Showing me information 30 images. Okay. Images have been imported. अब हुआ नहीं हुआ, how to check that? For that we go to image viewer. जैसे हम डेटा के लिए डेटा टेबल यूज करते थे टैबुलर डेटा के लिए, तो यहाँ पे वी हैव द इमेज व्यूअर। सो द images have to be given as an input to the image viewer. When I open it, and show me all the images. ठीक है, so my workflow has got the data now. Everybody was able to do till now? Ma'am, it's just uploading the photos. अच्छा, okay. Do this much. Now, of course, we all understand that machine works with numbers. So images को numbers में convert करना जरूरी है for him to work. And for that, they have given us this option. You can see here 0110 whatever. It's showing as an image, as a picture also here.
सो इमेज एम्बेडिंग, ठीक है। तो इमेज एम्बेडिंग का डेटा भी आपका, डेटा जो इंपोर्ट करा हमने, इट्स दैट। अब जब आप इसको खोलोगे, राइट, ये विल टॉक अबाउट एम्बेडर। इमेज मेरा एट्रीब्यूट है और एम्बेडर कौन सा लेना है, द वंस विच बाय डिफॉल्ट कम्स इज इंसेप्शन, वी चेंज इट टू स्क्वीज नेट। जैसे दिस इज गुड विथ these images, so we'll go for the squeeze net as my name of the embedder given, and we assume that my data has been converted to numbers. How much were you able to do? I'm done till here. Okay. Aisha and Sriram, what about you, beta? Downloading the pictures, ma'am. Oh, it's taking so much time. Ma'am, even mine is downloading. Okay. You have extracted it, that right? Or you're just downloading the folder till now? अच्छा करो, चलो, I mean we have to do it, no other option. Ma'am, I'm joining from my other device, so it Yeah, will. I've given you permission, don't worry. ठीक है, so my image embedding is done. Now इसके अंदर now we have to work upon uh, for him to create the classification model from me, right? अब उसके लिए हमें इसको देना पड़ता है। अच्छा, अगर मैं आपको इसका डेटा टेबल दिखाऊं, what exactly it has done. Ma'am, could you just copy paste the link again? Okay, Like the links that you sent in the chat. yes, I'll do that. I hope you got it. Yes, ma'am. Oh. Okay, now when I take you there with the data table, you find that it has got 30 instances, that is 30 images, no missing data, 1000 features. Actually, में इसको तुम देखोगे तो it's not only just height and this thing. There are so many features it has extracted from there in numbers. Too many of them. Too many of them. You see. Okay, so many features. Whatever it has done, it has been converted to numbers. ठीक है. Now we have to move on to my model, and before that we have to go for something called as calculating the distances. अब उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? We have to go to unsupervised वाला section. ठीक है. Here you have these models जो हमने पहले यूज करे थे, not this one, because they were working with the supervised data. We go for the unsupervised. राइट, सो अनसुपरवाइज में हमें सबसे पहले एक डिस्टेंसेस क्रिएट करना पड़ता है विद इन द डेटा, जो कि ही इज यूजिंग इट फॉर मैपिंग, सो दैट आई हैव टू गिव हिम एज एन इनपुट. I mean, the input which comes to this particular part is the image embedding. Obviously, input यहीं से जाएगा सारा, because यही वो समझेगा. ठीक है. Now distances में you have to, I think you are being shown Euclidean. ये हम लोग के नियरेस्ट नेबर में भी यूज करते हैं एल्गोरिथम में. इफ यू रिमेंबर, वी हैड यूज्ड इट, वी हैव हर्ड दिस नेम. देयर इज अ फॉर्मूला फॉर द यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेशन, जिससे कि वो उसको मैच करता है कि ये जो नया डेटा आया है वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी में जाएगा. But what I found that the book is saying that cosine is a better option for these. That is why I have selected the cosine. You may try once with the Euclidean also. I have not. You may try that. So distance comparison of the rows using this particular thing applied to it.
From here, we move on to the clustering part. Okay. With this hierarchy clustering, it displays a dendrogram. It's a diagram constructed from the distance matrix. इसको यूज करके वो एक डेंडोग्राम आपको देगा और डेंडोग्राम के थ्रू वी विल बी एबल टू सी दैट हाउ इट हैज बीन एबल टू create two groups, one for the dog images and one for the cat images. Okay, so we take this dendrogram here. Okay, distances, देखो इसका इनपुट डिस्टेंस होना चाहिए. ठीक है, हम इसको इमेज एम्बेडिंग नहीं देंगे, वो डिस्टेंसेस पे ही काम करेगा. सो इनपुट हैज टू बी डिस्टेंसेस. लिंक फ्रॉम हियर. These are the few small things which you have to remember when you get something like that, this to be done in the exams. ठीक है. अब when you open this, it is basically a dendrogram what it has created. It has taken your entire data set and divided into two clusters. Can you see that? This one and this one. Sorry. This one. और ये वाला, इसको ले जाके यहाँ क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है. अब हमें क्या करना है कि हम अब इसने क्या किया, ये तो सारा नंबर है और इसने अपने अकॉर्डिंग जो भी किया है. आई कैन नॉट रियली सी व्हाट इट हैज डन. In order to see that, I'll take my image viewer again. So I go here and take the image viewer again. And then I link this person's output to this place. ठीक है. लेकिन जब आप इमेज व्यूअर को खोलेंगे तो वो मुझे इस तरीके से दिखाएगा only when your selection of hierarchical clustering has been done. Now, if I don't select anything here, supposingly, this is it. No selection is done. And then I open my image where it is blank. तो यू से कि ये क्या हुआ. ठीक है, ये इस तरीके से लिंक करके इसको रेडी करा गया है कि जब और इसको डेटा भी नहीं मिल रहा बिकॉज वहां पे सिलेक्शन, वो कह रहा है सिलेक्टेड डेटा ही मैं उठाऊंगा टू शो यू द इमेजेस. राइट. सो जब आपका वहां पे कोई सिलेक्शन नहीं है तो दिस इज अ डॉटेड लाइन, डॉटेड और डैश लाइन एज वी से, दैट मींस इसको इनपुट नहीं मिला इमेज व्यूअर को, हेंस वी कैन सी आल्सो इट इज ब्लैंक. So you have to be a little careful about it that when you want the image viewer to show you that what exactly he has created. So I need to go here and maybe just take up any of the groups. जैसे मैंने इसको select कर लिया, इसको data मिल गया. You can see the dotted line has changed. And now when I go and image को मैं see करूंगी, I'll see that thing. So I'll find that मेरा जो second group था, those were dog pictures and all the dog pictures have come here and he's done it so well. There is no cat picture here. He was able to do it perfectly well with the images. Okay. हम इसको चेंज करते हैं to the second group. This one. And then again I say it. So all my cats have come up. Is it fine? Will you remember the way it has to be? The way it has to be used? अगर आप इसमें कोई सिलेक्शन नहीं रखोगे, you'll keep it like this, then you see that this has changed to dotted lines, and because of that, if you see here, it is not getting any input, so this is blank, right? But when you go and select a portion of it and then come to the image viewer, you can see the data has come. He's saying the selected data has come to me, and when I open, he's showing me this. Now you can take up any data set from Kaggle based on some images. No classification required, no tagging required. Random pictures का data set मिल जाए तो nothing like it. You can just write in Google and do. I didn't get time to do that. Otherwise, I'll try to provide you with that. And फिर इस चीज को करके देखो. ये data set तो मैंने आपको दे दिया, so it was directly available to you, right? So what we have done under the image analytics is we import the images here, not the data wala option from the data widget. Okay, I mean the category. We come to image analytics and यहाँ पे we pick up the import images. Import कर लिया.
जहाँ पे भी आपके इमेजेस है, उसके बाद उसको देख लिया विद द इमेज व्यूअर. Then I send this data to the image embedding because this is the fellow who's converting my data into numbers. Ultimately, is going to work with that. And in order to see what it gets converted to, we have attached a data table to it to see what exactly my converted data looks like. Though I don't understand anything out of that. But anyway, that's how it is being converted. The same data is being given to the distances widget. He is the person who's going to actually work on the features of the pictures and the gaps in them. From here, we are doing the clustering. Hierarchical clustering is the best option available for this. Based on that, he is able to make the two groups, divide the data into two groups. And in order to see that, I have to select one of the groups from the dendogram and then give it to image viewer for the group to be seen. That yes, it has done it correctly or not. I hope this is simple and good enough. Another question of your practical file done. Yes, ma'am, it came. It's working. Yes, Sriram, ma'am. Naisha, Krishna, everybody, it's working. Yes, ma'am. Oh, that's great. So another question of the thing is practical file is done. It's easy, simple, directly, कोई issue नहीं है. Data set आपका अच्छा होना चाहिए so that it is able to see the pictures clearly. And this can be used for a lot of things. I mean, you are saying flood hit images and non-flood hit images. You know, उसको they then see whether he is able to classify those images or not and बता सकता है कि वो कहाँ पे flood hit areas है, कौन से flood hit areas नहीं है. That can be there. Fruits का बना लो. You need the data set. If the data is available, then this is not difficult. Okay. I've sent you the data for the next example also, which we are going to do. Now we're going to do CV में ही classification वाला. ठीक है. So ये वाला हम लोग कल पिक करेंगे. It's going to be a little longer because classification model में हम उसको multiple models देते हैं, फिर उसको train करते हैं. So it's a little longer than this time we are going to do a prediction also. So I have in that data set, training data set and testing data set both separate. So हम testing देके उसको check भी करेंगे कि it is able to classify my data or not properly. Right? That's our next target. इसमें भी बेटा you can for your practical file, as and when you keep on doing it, just take snapshots of the output too. Of these कि इसमें मैंने क्या सेट किया and you took a snapshot of that. इसमें क्या आया you took a snapshot of that. Okay? So that step by step we can include it. Right? So I Yeah. am closing today. We meet tomorrow again with the next example. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye.